Welcome to the IVM Podcast Network. TFG Fantasy Cricket is an IVM production, and you can also check out their other awesome shows like The Podcast, a show that gives you a weekly lowdown on Mumbai's food, culture, and new openings in the city. You're listening to TFG Fantasy Cricket. Hey guys, welcome to a new episode of TFG Fantasy Cricket Podcast. We are back. India versus श्रीलंका चल रहा है. उधर ड्रीम 11 क्रिकबज़ ने थोड़ा सा लफड़ा कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ए, साउथ अफ्रीका ए. हमने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान डाल दिया था, बट चलो कोई नहीं. इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, वो हमारी मजबूरी थी भाई. हमको जो दिखा वही हमने डाला. एंड देन वी रियलाइज लेट इनटू द नाइट दे हैव चेंज्ड द शेड्यूल ड्यू टू व्हिच इवन ड्रीम 11 हैड टू अल्टर. एंड समबडी लाइक अ ट्यूशन टीचर सेड एट 12:30 इन द नाइट, नहीं ये बहाना नहीं चलेगा, मेरे को टीम चाहिए. सो माफ करना सर जी, आप जो भी ऐसा हो नहीं होता. आप जो भी हो माफ करो मेरे को. वी वांटेड टू गिव यू इन द मॉर्निंग, बट बिकॉज देयर वाज अ वेरी स्मॉल विंडो अवेलेबल टू अस, वी थॉट इट वुडंट बी फेयर for so many people listening to us, reading our articles. तो हमने कहा चलो ड्रॉप करेंगे. 75 for 5 था मैंने जब 75 for 5, yes. Is this India A? India A. In fact, Indian team ही समझो, because all these guys are experienced. They have been on international tours before. They played the IPL with all the big guns. Sanju Samson, Manish Pandey, Yuzvendra Chahal, Krunal Pandya, Rishabh Pant. You can go on and on. I think pretty much every player has played for India or is in the reckoning. And likewise for South Africa, you have Behadian, you have Smarts, you have Patterson, you have Aaron Fangiso, you have Reza Hendricks. All these guys are there. So it's a good series. Even Afghanistan, I'm telling you, it's a very good team. 6 players have played for their national team already. So it's going to be a great series, and hopefully if no more errors happen from CricBuzz or I don't know who is concerned, हम भी कोशिश करेंगे टीम पहुंचाने की. Yep. So at this point of time, जहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो शिखर धवन जस्ट आउट हो गया 190 पे. हाँ, ये सब उसको टी के पहले आई थिंक 200 मारने का. So I think Kuldeep Yadav had entered the ground and Shikhar Dhawan was talking to him, and this is all, ये सब मैं बनाता हूँ. ओके, सो मेरे को ऐसा लगता है कि कोहली ने उसको बोला रहेगा, तू 200 नहीं मारेगा ना टी के पहले, तेरे को मैं चाय नहीं पिलाऊंगा. सो तू जल्दी 200. हाँ, ऐसा होता है, बोलना चाहिए. मेरे को और कुछ सोचा नहीं, तो मैं बोला ये बोलूं करके. But the main point here is he was in our team. Hardik Pandya over Kuldeep Yadav. We are playing one shot. I think pretty much everybody is playing one shot. Even if you have Sri Lankan bowlers, you are playing one shot in my opinion. Because they don't pick wickets, man. Barring Rangana Herath and Dilruwan Perera, who happens to be the all-rounder, nobody is picking up wickets. So doesn't matter. And Gunaratne, what we saw on the field, he's been rushed to Colombo for operation on his left thumb, so he won't be playing in this test match. Bad luck to everybody जिसने भी लिया. हमने इसके बारे में घोषणा की थी कि लेना है नहीं लेना है, and we said okay, we'll let him go. So we are happily placed. Cheteshwar Pujara is our captain. Virat Kohli is our vice captain. 250 more runs to go. सब हमारे झोली में गिरने वाला है, कोई टेंशन नहीं है यार. तुम फर्स्ट, मैं फर्स्ट, जिसने हमारा टीम लिया वो भी फर्स्ट. आगे बढ़ो अभी. Okay, so आज का जो पॉडकास्ट है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, for England versus South Africa. Yes, it's the third test match. They are poised 1-1. Okay. So interesting बात. ये तो मैंने last हफ्ते जाना इस बारे में. Both these sides have been going at each other in test matches for many years. And interesting बात ये है, they have never won hosting a series. Can you imagine? England has never beaten South Africa at home. And vice versa. उल्टा test matches. बाकी सब जगह पे उल्टा होता है. Exactly. And these two just goes to show how evenly they are matched and how fearless they can play. A very formidable team. England obviously have drawn a lot of criticism for their loss at Nottingham. But Oval, a different ball game. I think बहुत सारे runs देखने को मिलेंगे यहाँ पे. And Nikhil will tell us more about, or rather tell you more about. काफी जन are coming back into the team. Yes. काफी जनों को yes, मिल गई है एकदम बराबर से. इंजरी हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है. Yes. So Rabada comes back. Rabada comes back after that 1 match suspension, and it is going to be a straight replacement. Dwayne Oliver will go out. Rabada will come in with Morris, Philander and Mone Mokal. And Nikhil's eternal favorite Keshav Maharaj. स्पिनर है ना, ले लेना चाहिए था. लिया है अभी. He is much better than Markwood. No doubt about it. यार अगर हम दोनों भी जाकर 80 ओवर्स डाल देना, एक विकेट तो मिल ही जाएगा. So yes. So does that mean Markwood को भी कल्टी?
मार्कवुड को स्ट्रेट कल्टी अगर नहीं, अंदर हम नहीं, इंग्लैंड नहीं, हम तो कल्टी दे ही रहे हैं, कंफर्म है ये बात. वेदर और नॉट they play him in the 11, we are not very bothered about that because we think the wickets will come from Broad, Anderson, Moeen Ali and Ben Stokes. Anderson, please go ahead. टीम बना है, इज इट रेडी? Yeah, it is ready. It is 99% ready. Yes. ओके, सो आई फील इंग्लैंड में मतलब अगले 10 साल तक एंडरसन टाइप बॉलर नहीं आने वाला. 10 साल से चल रहा है ये. या वो 10 भी साल मैं से बता चल दूं. रहा है. अगले 10 साल तक भी एंडरसन जैसा बॉलर नहीं आने वाला मुमकिन है, बिल्कुल. एंड Yes. you're planning to drop him. Before we get on to this, Keaton Jennings goes out. Keaton Jennings goes out. I'm not too sure from England's opening slot, but I think from our team, I once picked him, not once, in fact 2 बार गलती करी थी after what we saw at the Wankhede. Yeah. You and I, we were watching. इतना अगर कोई difficult conditions में बैटिंग कर सकता है तो घर पे क्यों नहीं कर सकता? But very, very strange. It's okay, these things happen. Gary Ballance goes out. Gary Ballance, I'm very happy he goes out. Somebody tweeted or somebody wrote to us saying, why doesn't Vivek like Gary Ballance? So you know the reason. So he's out. There is no balance, man. उसमें कोई balance ही नहीं है यार. यहाँ वहाँ घूमता रहता है. Very fluffy. I think this was the last. I feel this was the last test series for him to prove himself. Quite possible. Or maybe what he can do is take just give away the British passport, go back to Zimbabwe and play for Zimbabwe, just like Kevin Peterson. He's still thinking South Africa जाके खेलेगा. It's a dream यार. होता है यार. धोखा हमारे साथ ही होता है. चलो आगे. Anyways, okay, tell me, why not Anderson? Why not Anderson? One point being the budget. As you all know, 9 is Anderson. यार वो बजट में मतलब एंडरसन को होल्ड पे रखा. होल्ड पे इसलिए रखा क्योंकि ब्रॉड इज इक्वली good when it comes to English conditions, and I gave a logic why I would pick Anderson ahead of Broad in Nottingham, and which proved to be absolutely spot on. इस बार at the Oval for 2 reasons. One is okay, एक और मैं इतना सब नहीं बोलना चाहिए, वो कहते हैं ना समटाइम्स. यार मैं बहुत रिवील कर रहा हूँ. ओके, फिर भी बोल देता हूँ क्या है करके. व्हेन द बॉल विल रिवर्स, हाई प्रोबेबिलिटी नॉटिंघम में नहीं होगा, लॉर्ड्स में शायद नहीं होगा, बट ओवल में हो सकता है ये. एंड व्हेन इट रिवर्सेस, Anderson is a better exponent as compared to Stuart Broad. Conventional swing also he's better, but when the deck goes very flat, that's when Stuart Broad will come in handy. And बस यही thought था, and budget because I'm very hard pressed for it. No option. In fact, Stuart Broad has a better record at Oval. That's correct. He's someone. He's like a monomocule where there is no response, and he will generate so much energy and enthusiasm. He will run in. He's a proper captain's bowler. Of course, all this is agar koi injury na ho to. But if I had the budget, I would go with Anderson and Broad, but I just don't have the money. I can't do much. All right. तो अपना favorite discussion, favorite debate, wicket keeper position. हाँ यार, ये Quinton अगर de Kock versus Bairstow. So 2 things, guys. I was just wondering, Nikhil, you'll be surprised that I'm saying this. Probably we should start giving away 2 teams. Because yeah, people write to us saying team 2, team 3, team 4, and अभी Dream 11 ने 4, 5, 6 भी कर दिया है. तो प्रॉब्लम अपने को होता है. तो ऐसा मैं आपको एक सलाह देता हूँ, 2 टीम के साथ खेलो, ज्यादा ये मत करो, गोची मत करना. I picked Johnny Bairstow. But if you pick Johnny Bairstow, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है. You will have Root, you will have Moeen Ali, you will have Stokes also. Then South Africa बैटिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. You can't miss Hashim Amla for this test match. Please ऐसा गलती ना करे. 311 वो हो सकता है तो for the next 5 days, just write 311 on a piece of paper and आपके बाथरूम में चिपका देना, so that you pick Hashim Amla all the time. Number 2, Keshav Maharaj, when the wicket, historically the wicket at the Oval will be abrasive when it comes to day 3, 4 and 5, and that's when the spinners will come into play. मुझे लगता है Moeen Ali is a fantastic choice as a captain or a vice captain for this test match. We are picking him obviously. कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे, बट मुझे अगर 2-3 प्लेयर को पिक करना है एज डार्क हॉर्सेस, आई वुड से मोइन अली एंड केशव महाराज फॉर दिस टेस्ट मैच. दिस इज फॉर योर ग्रैंड लीग्स. कमिंग बैक टू नॉर्मल लीग, हमारा बैटिंग क्या है निखिल? अपना साउथ अफ्रीका से नहीं बाउमा नहीं, नो बाउमा. आई एम पिकिंग एल्गार, आई एम पिकिंग हशीम आमला एंड आई एम पिकिंग क्विंटन डिकॉक. और क्विंटन तो कीपर में जाएगा. जो रूट फ्रॉम इंग्लैंड. Then there's this new guy. So Tom Westley, अगर आपको नहीं पता है, he's a 28-year-old right-hand batsman who bowls a bit of off-spin. He's been doing well in county cricket. He's scored so many runs now, and people are backing him. The selectors, the former players, even
he's been there in the fielding drills, बहुत अच्छा कर रहा है. He might edge out the other guy who happens to be David Melan. So David Melan के बारे में I think people already know because they have been playing so many T20 leagues across the world. I think if Jennings loses his spot, you could see Melan batting up and then route number 3 and so on and so forth. But I think 2 changes to minimum होने ही है England के team में. And like we said earlier, South Africa will make only 1 change in Rabada for Dwayne Oliver. That's it. Philander छोड़े? I mean, ये ऐसे थॉट भी नहीं आना चाहिए. I know, लेकिन किसको तो so फाइनल टीम तो मैं बताना ही भूल गया, बट मैं ये भी बता दूं कभी भी चेंज हो सकता है. We haven't read any reports. We are being very very obedient. We try to come early. Sometimes we have to trouble the producers, the sound engineers. We still make up so many things and try and present a very good product to you. तो अगर मैं रात को 12 बजे घर पहुंचता हूँ तो प्लीज डोंट पिंग मी एंड से ये चेंज हो चुका है. ऑब्वियसली आई विल कंसिडर. कल दोपहर को मैच है. एक बात बताओ यार निखिल, कैप्टन वाइस कैप्टन क्या किया जाए? आई थिंक वाइस कैप्टन, अच्छा कैप्टन तो शुड बी अ नो ब्रेनर इन टर्म्स ऑफ जो रूट. व्हाई नॉट हशीम अमला? वो वाइस कैप्टन. तो क्विंटन डिकॉक? I know we had this discussion in the office, but then when it comes to Oval, I think we should think of Hashim Amla. Hashim Amla is a very very good choice. He's looking good now. He's settled into the English conditions and I don't know man. It's so अभी क्या है? रूट तो है पक्का. Who is the captain? Who is the captain? हाँ. अभी मेरे को लगता है क्विंटन डिकॉक, क्योंकि जैसे हमने थर्ड टेस्ट मैच में देखा था, ही बैटेड नंबर 4 एंड वी ऑल नो हाउ ही प्लेज वेरी फ्रीली एंड 5 or 6 catches per test match is just a given. I'm absolutely convinced उसकी जो catching ability है, it's just phenomenal man. I mean he doesn't drop any so I think the way England have been batting, the way South Africans have been bowling, coupled with the favourable conditions, Quinton de Kock will be a champion keeper. He will give you a lot of points. And if he bats the way he did in Nottingham, batting at number 4, boss, you are in for some real treat. Having said that, Johnny Bairstow is equally good. And I think there will be a lot of responsibility on his shoulders. So, vice captain? Vice captain Quinton de Kock. Actually, it's like a seesaw between Amla and de Kock. Let's so at this point in time it is Quinton de Kock. अभी तो है. Okay. लेकिन क्या है ना, ये जो रात की जो नींद है ना, इसमें आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ देखता है. सुबह नया आदमी बनकर उठता है वो. तो कल सुबह चेंज होगा? मालूम नहीं, मतलब मैं बस लोगों को चौकन्ना कर रहा हूँ यहाँ पे. I'm just warning people. That's just all. Go through the whole team. Just go through the whole team. Okay, Quinton de Kock, Hashim Amla, Dean Elgar, Tom Westley, Joe Root, Moeen Ali, Ben Stokes, Chris Morris. बैटिंग बॉलिंग दोनों, केशव महाराज, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड वर्नन फिलैंडर. ओके, एक बात बोलता हूँ. व्हाई नॉट जेम्स एंडरसन इन प्लेस ऑफ डीन एल्गार? इट गोज वेरी अभी बजट भी है यार. या अगर ओके, सो द स्वैप वुड बी एंडरसन इन एंड एल्गार आउट, व्हिच मींस वी प्ले 4 इंग्लैंड bowlers. That's okay. Anderson is anytime going to give more points than Elgar, don't you think? Not a bad argument, but I just feel if the pitch goes flat, which we have seen over the years at the Oval, he might get you a 60, 70 or even 100. And there were signs of Elgar settling into his stride in the 4th innings of the last test match. और किसने बिगाड़ा? बिगाड़ा तो डुप्लेसी ने मेरा. नहीं, डीन एल्गार का he was trying to settle in. I know. Oh, वैसे. Yeah. हाँ, yes. So one more point for us to consider. So yes, so there you go. So 99% comes down to 98% now, or 90%, whatever. But yes, we will brood over this. You have time equally like us. So that's what it is. No major changes. And the weather looks okay. So yeah, good luck guys. Okay. हमारा टेस्ट टीम बड़ा अच्छा चल रहा है. हम जिंक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, let's keep it that way. Guys, if you have any doubts, फिर से वही डाउट मत पूछना कि अरे एंडरसन एल्गार की जगह. कोई और डाउट होगा तो अलग पूछो यार. ऐसा पूछो कि हम भी सोच में पड़ जाए कि ये हमने क्यों नहीं सोचा. TFG Fantasy 11 is an XI. All of our articles will be up on our website, thefangarage.com. Facebook page is Fantasy Pundit, and you can listen to this podcast on IndusVox Media, SoundCloud, Audio Boom, iTunes, and we'll be doing Caribbean Premier League.
वो तो गिवन है. चलो नहीं, लोग पूछते हैं. चलो बाय. एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी. बोलिए मैडम. मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑन कोर्स है, साइरस है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वैक्स है, IVM लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, थिंग्स एंड डेस्टिनेशंस है, माय नेबर जकरबर्ग है और द फैन गराज है. आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम. आप जाओ IVMpodcast.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप. सब आपकी उंगलियों पे.